नंबर 3 आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट इसके अंदर सबसे पहले है, जिसमें वो कहता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर जो है वो मुश्तमिल होता है। हार्डवेयर जो है आपको फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो आपको हिदायत देता है। हार्डवेयर के अंदर जो कंपोनेंट्स आपके पास शामिल होते हैं, जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू होता है। जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम या डॉक्यूमेंटेशन और या हार्डवेयर टास्क की सूरत में होगा, जो भी हार्डवेयर की तरफ से दी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन के अंदर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, जो हार्डवेयर ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं और उनके बताए हुए एक्ट के ऊपर यूजर और मशीन के दरमियान काम परफॉर्म करते हैं। जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैनेज करता है तमाम रिसोर्सेज को। जाहिर सी बात है, आप एक पीसी के अंदर कोई चीज गेम प्ले करनी है या सॉन्ग आपने प्ले करना है, जाहिर सी बात है आप उसको कोई कमांड देंगे, वो कमांड जो आप देंगे उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे मौजूद है उसको वो प्रोसेस करेगा और सारी चीजें लेकेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। विंडो लिनक्स, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स हैं, जिसमें अलाउ कम्युनिकेशन विद स्पेसिफिक हार्डवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर मेंटेनेंस टूल्स, एंटीवायरस डिस्कन्फर्मेशन होती है। इसके अलावा डीफ्रैगमेंटर मेंटर, उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, कन्वर्ट्स कोड टू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर दो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये मदद देता है यूजर को टास्क परफॉर्म करने में। ठीक है, और एक कस्टम बिल्ड होता है, जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैंक सॉफ्टवेयर में ये खुद कस्टम बिल्ड होता है। ठीक है, इसी तरह से आप एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल यूज करते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जो जनरल पब्लिक के लिए होती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं, जिसके अंदर शेयरवेयर, फ्रीवेयर, पब्लिक डोमेन, ओपन सोर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। शेयरवेयर फ्री ट्रायल वर्जन होता है परचेस करने से पहले। इसी तरह से फ्रीवेयर जो है वो आप फ्री यूज कर सकते हैं, कोड इसका प्राइवेट होता है। लेकिन पब्लिक डोमेन जो होता है वो नो कॉपीराइट होता है, फ्री फॉर एवरीवन के लिए होता है। ओपन सोर्स के अंदर कोड अवेलेबल होता है मॉडिफिकेशन के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेजेस आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो उसके सिंटैक्स को समझता है। इसमें दो लैंग्वेजेस होते हैं, एक लो लेवल, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो 0-1 की लैंग्वेज होती है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंसान करीब होती है, C++, जावा, पाइथन, इसको इंसान कर सकता है, समझ सकता है, इसके थ्रू प्रोग्राम भी बना सकता है। ठीक है, तो इसके बाद लैंग्वेजेस हैं प्राइमरी, इसके यूज हैं, जिसमें टीचिंग प्रोग्रामिंग है, बिगिनर फ्रेंडली, जनरल पर्पस है, सिस्टम एंड गेम डेवलपमेंट है, नेटवर्किंग है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स हैं। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर्स आ जाते हैं, जिसमें 3 किस्म के हैं, जिसमें कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये आप जो भी उनको लैंग्वेज में कमांड देते हैं, ये उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ट्रांसलेट करते हैं, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करने के बाद असेंबली लैंग्वेज जो को दे के उसके बाद वो मशीन कोड में उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। सिंपल सी बात ये है कि आप कोई भी अगर 0-1 की शॉप में कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर होने के बाद वो आपके साथ जो है वो आउटपुट शो करवा देता है। कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में, और जो इंटरप्रेटर है वो ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, और असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो आज का ये हमारा तीसरा चैप्टर था, जिसको हमने डिस्कस किया है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी आएगा। इसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स को, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और लैंग्वेज प्रोसेसर्स को जो है वो हमने डिस्कस किया है। मैं फिर बता देता हूँ, जो कंपाइलर होता है ये ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जस्ट आपने इतना जो है वो अपने माइंड में रखना है। अब हम चलते हैं, इनके जो MCQs हमारे पास गिवन है हम उसको जो है वो डील करते हैं, उनको देख लेते हैं। जो हमारे पास MCQs हैं, मैं MCQs की जो है वो फाइल निकाल लूं तो इंशाल्लाह हम उसको जो है वो ब्रीफली तौर पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मौजूद हैं जिनको हमने जो है वो करना है। आप अपने स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 3 जो है उसका जो सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो है अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स। इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जिस कंप्यूटर सिस्टम के। अभी हमने ये शॉर्ट नोट्स में पढ़ा भी है। ठीक है, हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन, इट नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है व्हाट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट मेंशन इन द टेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। उसके बाद फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है सॉफ्टवेयर इज द अपोजिट ऑफ डैश व्हिच डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। Software consists of programs, documentation and configuration of data.
नेक्स्ट हमारे पास है different sets of software can be loaded on the same dash to perform different tasks. Hardware, an example of hardware component that carries out tasks is its processor. Which component constitute the physical aspect of the computer hardware? नेक्स्ट हमारे पास है which is used to write a report या run payroll program. Software. Software is primarily divided into how many categories? 2. Which software controls and manages the actual operations of computer hardware? System software. System software act as a dash between the user and computer hardware bridge. Which of the following is an example of system software? Operating system. Application software is used to solve dash life to task or problem, daily or routine. MS Word, MS Excel are example of application software. Which type of software include device drivers? System. A language translate like a compiler is a type of system software. Skype is categorized as application software. Which software is used for a specific user task like writing and browsing? Application software. An operating system acts as an between the user and hardware intermediary. According to the text, an operating system is like a government. Which of the following is not an operating system? Mention Skype. The operating system provides services to application programs. Linux and Unix are example of system software and operating systems. What manages all computer components and its operations? Operating system. Microsoft Windows is a type of operating system. Sun Solaris is an example of operating system. OS manages hardware resources. Which OS is mentioned along Windows and Mac? Solaris. Software designed for the demand of particular customer is called custom built software. Bank software is an example of custom built software. Software developed for sale to general use is called packaged software. Nadra software is an example of custom built software. Departmental software falls under the category of custom built software. When a customer purchases software according to their needs from a store, it is usually packaged. Which is not an example of application software? Device driver, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है. Google Chrome is a type of application software क्योंकि हेल्प करता है यूजर की, कस्टमर की. Adobe Acrobat Reader is an example of application software. WinRAR is used for file compression application software. A utility program is a type of system software. Utility programs are used to solve common problems of software and hardware. Utility program helps in reducing file size. File compression software. Which program helps recognize files on a disk to improve performance? Disk Drafter. Which of the following is a utility program? Antivirus. A program used to remove unwanted software is called an uninstaller. Firewall is a category as a utility program. Disk cleanup is used to remove unnecessary files. SanDisk is an example of utility program. Task manager is used to manage system tasks. Software that a user can try for free for a limited time is called shareware. When a tripod ends for shareware, the user must purchase or uninstall. Software that is free for personal use forever is called freeware. Freeware user can note it or sell it to other, make change to. Software with no copyright owner or license restriction is public domain. In which software is the source code publicly available for everyone to modify? Open source software. Public domain software source code is publicly available. Which software requires a paid license for commercial use? Freeware. Open source software can be customized with guidelines set by the creator. Shareware is a typically download from the internet.
A computer language is a way of communication between the user and the computer. The rules of computer language are called syntax. A computer understands only the language of 0 and 1. Language that is close to the computer is called low-level language. Low-level language are divided into machine language, assembly language. Which language is directly understandable by the computer without translator? Machine language. Machine language consists of binary numbers 0 or 1. Which language use names instead of numbers to make programmable easier? Assembly language. Machine language is difficult for the programmer to understand. Assembly language falls between machine language and high-level languages. Language that is close to human language is called high-level language. High-level languages are written like English language. High-level languages are easy for the programmer but difficult for the computer. Which language was developed in 1917 by Nicolas with Pascal? Pascal was named after a famous French mathematician. What does BASIC stand for? Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. Which language was developed by Dennis Ritchie in 1972 at Bell Labs? C++. COBOL is primarily used business applications. What does COBOL stand for? Common Business Oriented Language. Fortran stands for Formula Translation. Fortran is used for mathematical and scientific purpose. Which language is used for the server and client networks code programming? Java. Which language is used to teach programming technique? Pascal. C is described as a programming language, procedural. The programmer is more comfortable with high-level languages. What is used to convert high-level code into the machine code? Language translators. Language translators are also called language processors. A translator that translates a program as a whole is called compiler. A compiler is used in which language according to the next? C and C++. Are translators that execute code line by line is called interpreter. Interpreter are used in web browser like Google Chrome. Which translators converts assembly code into the machine code? Assembler. If a programming is translated one instruction at a time, which translator is being used in interpreter? The source program is what the programmer writes. A compiler converts high-level language into the low-level language? Machine language. Internet Explorer use which type of a translator? Interpreter. The diagram shows assembly code going into the become machine code? Assembler. Which of the following is not a type of language processor? Machine code is also known as binary code. High-level language is easier to understandable and use the program. जी बिल्कुल, मैंने आपके साथ जो है ये आप अपने स्लाइड्स दे सकते हैं कि जो मैंने आपके साथ शेयर